is concept of limiting reagent. Limiting reagent concept. It is very important. This concept of limiting reagent is very important. I can say it is very important because in many questions it is involved not only stoichiometry but also questions of chapter like ionic equilibrium coming ahead later on. This chapter will be involved. This concept is involved. इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, whenever reaction take place of the two reactants or more reactants, then there are some possibilities. If I write suppose reaction taken of element A and B, suppose ratio taken 1:2, they can give product C, pressure 3 moles. If I take reaction taken here 5 moles of A, 8 moles of B are given in the reaction. We take one hypothetical reaction, if 5 moles of A taken and 8 moles of B taken, they can give C. They can give in the reaction C. So when the reaction gives C product in the reaction, they ask you find the moles of C. Now to solve the moles of C, we can see the A and C relation. 1 mole of A give 3 moles of C. 1 moles of A give 3 moles of C. Then 5 moles should give how much mole? 15 moles. But 15 mole is not the answer. 15 mole is not the answer. In such questions, we involve the concept of limiting reagent. So first write definition of limiting reagent. Write down definition. It is the reactant. It is the reactant which is completely consumed. It is the reactant which is completely consumed in the chemical reaction. Completely consumed in the chemical reaction. Chemical reaction. Or write next line. It is that reactant. It is that reactant which is less than required. It is that reactant which is less than required for reaction completion. Which is less than required for reaction completion. ठीक है? It is that reactant which is less than required for reaction completion. Right, next point. The amount of product. This is a very important point. The amount of product depends only on the amount of limiting reagent. The amount of product depends only on the amount of limiting reagent. The amount of product depends only on the amount of limiting reagent. एक पॉइंट में आप और ऐड कर लीजिए. Actually, what happens sometime in the questions, you may not be given reaction, you may not be given the reaction, or if reaction given, it may not be balanced. So make sure कि the reaction is balanced. So this point also note down, लिख लीजिए. Point easy है, पता होता है बच्चों को, फिर भी sometimes they commit mistake. So write one more point. To solve the question using mole concept, to solve the questions using mole concept, we must have a balanced chemical reaction. We must have a balanced chemical reaction. We must have a balanced chemical reaction. Okay? लिख लिया. Now to solve this question, we can take first we can compare A and B. As per reaction, 1 mole of A require how many moles of B? 2 moles. From reactions of 5 moles of A shall require how many moles of B? 2 by 1 into 5 कितना हुआ? 10 moles. कितना दिया है इस क्वेश्चन में? Only 8 moles. So in this reaction, reactant B become your limiting reagent. Limiting reagent.
In the reaction B become your limiting reagent. So we cannot write answer was 15 moles because for complete reaction of 5 moles of A, we are requiring 10 moles of B. आपको इसका 10 मोल दिया ही नहीं है, B का 10 मोल चाहिए, आपको दिया ही नहीं है B का 10 moles. That means A cannot react completely. A cannot react completely. So क्या हुआ इस केस में? B become your limiting reagent. So I told you this point कि the amount of product depends only on the amount of limiting reagent. Only on the amount of limiting reagent. To solve this question, you can say here we will take B only, not A. We will take 2 moles of B. Give how much C? 3 moles from reaction. Then 8 moles of B will give how much C? 3 by 2 into 8. That's how much here? 12 moles. So for this question, what is the correct answer? 12 moles. अब इससे क्या होता है, अगर आपने बिना क्वेश्चन को देखे चेक किए, आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया कि 1 मोल ऑफ A give 3 moles of C, then 5 मोल give 15 moles, 3 into 5 will not be correct answer. So whenever it is given in the question, given 2 or more reactants, first you identify the reaction limiting reagent. First you identify the reaction limiting reagent, and then you find the amount of product. I told amount of product depends only on the amount of limiting reagent. The amount of product depends only on the amount of limiting reagent. So I hope this concept is clear. कि आपका कोई भी क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा है मैंने 2 रिएक्टेंट लिए, we can take 3 रिएक्टेंट्स. तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें भी चेक करते हैं कि for the reaction which substance is the overall limiting reagent. आप उसको यूज करेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए. ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. प्रॉब्लम्स के ऊपर है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई कैन से वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस चैप्टर स्टोइकियोमेट्री एज वेल एज इन चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम. कि व्हेन वी मिक्स एसिड एंड बेस, फाइंड द पीएच. अब बच्चे अगर इसको ध्यान नहीं रखते हैं, दे कमिट मिस्टेक. ओके, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस concept first. To make this concept clear, we will take certain more examples, more questions in the next class. Hello students. So today we'll discuss about some problems on the concept of limiting reagent. As we know, it is very important concept. Already we have discussed 1-2 question earlier. We can take some more question practice on this topic, concept of limiting reagent, because in solving many questions, many problems of stoichiometry or mole concept, it is involved. Whenever a reaction is given to you or amount given of 2 or more reactants, it is always possible that one of the reactant can act as limiting reagent. So it is very much essential that before you solve the problems directly, you must identify the limiting reagent. You should identify the limiting reagent and then start the question solving. Okay? So let us see how to identify limiting reagent in some more examples. Next question given to you here is, suppose example given reaction of magnesium plus oxygen given magnesium oxide. One reaction given to you. As the data in the question what is given, 20 gram magnesium is reacting with 10 gram oxygen. Find the weight of magnesium oxide produced in the reaction. That's an elementary question. 20 gram. You may get question like statement wise, 20 gram magnesium is reacting with 10 gram oxygen. Find the weight of magnesium oxide. You can't write the answer with 20 plus 10, 30 gram. It can be possible only when in the reaction both reactants are completely consumed. You are not sure about this. So before we solve the problem here, we must identify in the reaction limiting reagent. To solve this question, you first see आपका जो डेटा क्या बोल रहे हैं, 1 mole of magnesium is 24 gram. Require how much of oxygen? Half mole. Half mole means 16 gram. And when reaction get over, they will produce 40 gram of magnesium oxide from data equation wise. कि आपका जो बैलेंस रिएक्शन दिया है उसके अंदर आपको दिया है 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए आपको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन 16 ग्राम. फिर आपको कितना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड? 40 ग्राम देगा आपको यहाँ पे.
तो इस रिएक्शन में करने के लिए आप देखिए 24 + 16 40 ग्राम आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 20 ग्राम है, यहाँ 10 ग्राम है। तो फर्स्ट इन द रिएक्शन आइडेंटिफाई लिमिटिंग एजेंट। सो हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग एजेंट, लेट अस चेक। देखिए एज पर रिएक्शन 24 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर how much oxygen for reaction, 16 gram from equation, and 20 gram of magnesium will require how much O2, 16 by 24 into 20 gram, that's how much coming on solving, 2 by 3 means 40 by 3 कितना आएगा 13.33 gram, but how much O2 given, only 10 gram. Try to know this point, understand this point कि 20 gram magnesium require oxygen how much, 13.33 gram, but दिया कितना है, only 10 gram. So in the reaction O2 will act as limiting reagent. In the reaction O2 will act as limiting reagent. The reactant which is less than required for reaction completion will be called as limiting reagent by definition. And then we told कि amount of product depends only on the amount of limiting reagent. So what is limiting reagent? Oxygen. For finding the amount of magnesium oxide, the product you take only oxygen for the amount of product calculation. देखते हैं कैसे निकालेंगे amount of oxygen MgO. 16 gram of O2 gives how much magnesium oxide? 40 gram. So how much given the reaction oxygen? 10 gram of O2 will give magnesium oxide 40 by 16 into 10. कितना होगा सॉल्व करने पे? 8 to 5, 550 by 2, 25 ग्राम. आप चेक कर लीजिए. So in this case the answer become 25 ग्राम. समझ आया नहीं आया कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है इसमें 2 रिएक्टेंट दिए हैं या 3 रिएक्टेंट दिए हैं, आपका पहला एम क्या होगा? इन द रिएक्शन टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग एजेंट, बिकॉज all the reactants are not completely consumed. If all the reactants are not completely consumed, then whatever reactant is not reacting cannot form product. So to find the product amount, it depends only on the amount of limiting reagent or the reactant which is reacting completely. In solving, first you identify limiting reagent and then you find the amount of product. I hope it is clear. Good. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद. Okay, write next question now. Write on. देखिए 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है. रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl to form CaCl2 plus H2O plus CO2 गैस. आपको रिएक्शन दिया है, इसमें क्या दिया आपको क्वेश्चन में, आप डेटा लिख सकते हैं. 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is reacting with 20 gram of HCl. 50 gram of CaCO3 is reacting with 20 gram HCl. Find the weight of calcium chloride produced, weight of water produced, and for CO2 gas volume at NTP conditions. Question आपको दिया है कि 50 gram of CaCO3 is reacting with 20 gram HCl. Find the weight of calcium chloride, water, and CO2 gas. CO2 gas. What is the volume at NTP? That's question given to you. You try yourself first, then. So when you try this question, we can see the observation in the reaction. It has molar weight of calcium carbonate 100 gram. Required for reaction how much HCl? 2 into 36.5. कितना हो जाएगा ये? 73 gram. 1 mole means molar weight is 111 gram. Water is 18 gram and CO2 volume is 1 mole. 1 mole of any gas at NTP have volume 22.4 liters. Again, to solve this question, we must identify first in the reaction limiting reagent. In the reaction, we must identify first limiting reagent. तो कैसे चेक करेंगे? Again, we check first. On checking, we take from reaction 100 gram of calcium carbonate require HCl how much for reaction? 73 gram. So it is 50 gram taken for the reaction. Need how much HCl? 73 by 100 into 50 gram. कितना हो जाएगा ये? Half of the 73.
36.5 gram. Given how much? Only 20 gram. So in the reaction HCl become limiting reagent. In the reaction HCl become limiting reagent. क्या था definition से? The reactant which is less than required for complete reaction. क्या होता है? Reactant which is less than required. हमारा कितना required है reaction के लिए? 36.5 gram. कितना दिया है क्वेश्चन में? 20 gram only. So the definition wise the reactant which is completely consumed or less than required for reaction completion is called as limiting reagent. So first in the reaction when you identify limiting reagent, then we told amount of product depends only on the amount of limiting reagent. So to find the amount of product आप देख सकते हैं to find CaCl2 or H2O or CO2 all with a limiting reagent. So as for reaction 73 gram HCl gives how much calcium chloride? 111 gram. So 20 gram HCl will give how much CaCl2? 111 by 73 into 20 gram. Similarly, water produce, you can write directly weight of water कितना आपका आना चाहिए? 18 by 73 into 20 gram. समझ आ रहा है? और आपका CO2 गैस का वॉल्यूम we can again take from reaction 73 gram HCl gives or evolves how much CO2 gas? 22.4 liters at NTP. At NTP. So 20 gram of HCl will evolve how much CO2 gas? 22.4 by 73 into 20 liters. That the volume of CO2 gas evolved at NTP. Means आपका पहला टारगेट क्या होगा? Identifying the limiting reagent. फिर क्या होता है कि amount of product will depend only on the amount of limiting reagent. आप पहले कर लो इसको आराम से. First in the reaction identify limiting reagent and then start solving the question and solve the question accordingly. समझ में आया क्वेश्चन वाला? चलिए. Then we take next example. आपको रिएक्शन दिया है बेरियम क्लोराइड with sodium phosphate will given the reaction barium phosphate plus sodium chloride. आपको रिएक्शन दिया है, यहाँ पे मोल्स दिए हैं इस क्वेश्चन में. क्या क्या आपको दिया है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन? इसका दिया है BaCl2 का 0.4 मोल्स, इसका दिया है 0.2 मोल्स. पूछा है द रिएक्शन what is required the question? We need some information. In the reaction find first bit limiting agent, second part reactant left unreacted and how many moles? How many moles? और last part क्या है? Moles of each product. Write the question. या पहले इक्वेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे in the reaction identify या find the limiting reagent. Second part which reactant is left and how many moles and find the moles of each product. आपको तीन चीज निकालना है इस क्वेश्चन में. You try this question yourself then see the solution. Now see the solution part. पहले आप रिएक्शन को चेक करो. यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? कैन वी से कि सोडियम फॉस्फेट इज लिमिटिंग एजेंट डायरेक्टली? नो. दिस रिएक्शन इज गिवन टू अस, इट इज नॉट बैलेंस. यहाँ कितना दिया? बेरियम 3, यहाँ पे दिया सिंगल बेरियम. तो जब भी क्वेश्चन मिलता है, इक्वेशन अगर दिया है तो चेक कर लो कि वो बैलेंस है कि नहीं है. अगर आपको रिएक्शन दिया है बट बैलेंस नहीं है तो पहले आप क्या करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आप देखते हैं उसका सॉल्यूशन. तो यहाँ पे रिएक्शन तो दिया है बट बैलेंस नहीं है, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा? रिएक्शन का बैलेंसिंग. कितना दिया? बेरियम 3, हाउ मेनी फॉस्फेट 2, देन फाइंड द प्रोडक्ट. कितना सोडियम? 6 NaCl. तो इन द रिएक्शन BaCl2 प्लस सोडियम फॉस्फेट गिव बेरियम फॉस्फेट एंड NaCl. ये आपका बैलेंस रिएक्शन होगा. इसमें इसको बैलेंस करने के बाद आप चेक करेंगे इसके आंसर्स को.
तो इसमें सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले आप कंपेयर कर लो रिएक्टेंट का अमाउंट फ्रॉम रिएक्शन अगेन यू कैन टेक हियर 3 moles of BaCl2 require how much sodium phosphate, 2 moles बैलेंस रिएक्शन से। यहां कितना दिया है 0.4 moles require how much for sodium phosphate 2/3 into 0.4 कितना हुआ ये 0.8/3 0.266 दिया कितना only 0.2 moles, so in the reaction the sodium phosphate become limiting reagent. Your one answer. In the reaction sodium phosphate is your limiting reagent. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि हमारा कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए BaCl2 का 3 moles के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड था। अगर हम लेंगे 0.4 मोल तो कितना मोल रिक्वायर्ड हुआ 0.8/3 मींस 0.266 मोल्स। दिया कितना है केवल 0.2 मोल। इसका मीनिंग क्या हुआ सोडियम फॉस्फेट इज लेस देन रिक्वायर्ड, सो बिकम लिमिटिंग रिएजेंट फॉर द रिएक्शन। अगला पार्ट है दैट मीन दिस कंपाउंड इज एक्सेस, दिस कंपाउंड इज इन एक्सेस। तो अगर हम चेक करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में कि 2 moles of sodium phosphate require how much BaCl2 3 moles, then कितना है 0.2 moles will require how much BaCl2 3/2 into 0.2 3/2 into 0.2 कितना हो जाता आपको ये 0.3 moles। then how many moles of BaCl2 left unreacted, कितना बचा रहेगा आपका दिया है 0.4 moles कंज्यूम हो जाएगा 0.3 moles, तो how many mole remain 0.1 mole। it is second part of question कि 0.1 mole of BaCl2 is left unreacted in the question, means at the end of reaction। समझ में आया क्या मतलब? then the amount of product that depends on what, only on the amount of limiting reagent। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे कितना है 2 moles give 1 mole, then 0.2 mole give 0.1 mole, 2 mole give 6 moles, 0.2 mole give in same proportion 0.6 moles is third answer। what is third answer? moles of barium phosphate 0.1, moles of NaCl produced 0.6। अब देखो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 से 1 बना तो 0.2 से 0.1 बनेगा, 2 से 6 बना तो 0.2 से 0.6 बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? चलिए दैट इज द कांसेप्ट टेकन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सम क्वेश्चंस अगर आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप पहले बैलेंस करेंगे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया एग्जांपल जरा? चलिए नाउ if I take one two more example, let's say next example, in the reaction we may have 3 reactants। if in a reaction we have discussed question till now 2 reactants, if in a question we have 3 reactants, suppose we have 3 reactants, then how the question can be solved? देखिए आपको रिएक्शन दिया है 2A plus B plus 3C, in the reaction give 4D plus 5B। I will take a hypothetical reaction। let's take one hypothetical reaction where we take A plus B plus C give D plus E in the reaction। तो इसमें क्या दिया है आपको? इसका दिया है 3 moles, इसका दिया है आपको 2 moles और इसका दिया है आपको 4 moles। पूछा है क्वेश्चन क्या है? फाइंड द moles of D and moles of E produced at the end of reaction। ये आपको निकालना है इसके इसमें moles of D and E produced in the reaction। So how to solve this question? You try this question। See, to solve this question we again need to identify limiting reagent। We identify the limiting reagent। अब इसमें क्या होता है कि अगर 3 रिएक्टेंट दिए हैं, अगर आपको दिया है 3 रिएक्टेंट दिए हैं तो क्या होगा इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट बाय कंपेयरिंग 2 reactants at a time। When we are given 3 reactants, we will identify the reactions overall limiting reagent,
how to identify? You first compare two reactants. आप पहले दो को कंपेयर कर लीजिए. In those two reactants, you first identify one limiting reagent. उनमें से कौन सा आपका हुआ लिमिटिंग आप पहले पता करेंगे. फिर जो भी उन दोनों में से हुआ लिमिटिंग रेजेंट आप उसे कंपेयर करेंगे थर्ड रिएक्टेंट से. फिर अगर थर्ड और उसमें वो आपका लिमिटिंग हो जाएगा, दैट इज योर आंसर. कि थर्ड और वन में जो बचेगा, जो भी आपको बचेगा, वो आपका होगा रिएक्शन का ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट. कैसे आप करेंगे इसको आइडेंटिफाई? लेट अस सी दिस क्वेश्चन. देखिए, आप पहले कंपेयर कर लीजिए ए और बी को. ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी, देखिए, from balanced reaction 1 mole of B require 2 moles of A. 1 mole of B require how much A? 2 moles. Then 2 moles of B will need how much A? कितना हुआ? 2 by 1 into 2 कितना रिक्वायर्ड हुआ? 4 moles. आप चेक कर लो. For 1 mole need 2 moles. For 2 moles we need 4 moles. कितना दिया है आपका A यहाँ पर? 3 moles only. तो out of A and B, A is your limiting reagent. Out of A and B, A become your limiting reagent. कैसे हमने देखा कि 2 moles के लिए आपको 4 moles चाहिए थे, दिया कितना है? खाली 3 moles. तो out of A and B, A is your limiting reagent. But you can't write the answer कि A is your limiting reagent of the reaction. For reaction to identify हम क्या करेंगे? Compare. We will now compare A and C. Now we compare A and C. ये हमारा चेक हुआ कि out of A and B A होगा limiting reagent. अब हम चेक करेंगे A और C को कि उन A और C में कौन सा reactant आपका limiting reagent होगा. कैसे चेक करेंगे? Again by taking the moles comparison. देखिए, 2 moles of A require how much C? 3 moles. Then 3 moles require how many moles of A? 3 by 2 into 3. कितना हुआ ये? 4.5 moles. कितना दिया आपको है? Only 4 moles. So C will be your limiting reagent, or C is taken the reactions overall limiting reagent. क्योंकि out of A and C, C is limiting reagent. Out of A and B, A was limiting reagent, but C उससे भी कम है जितना आपको रिक्वायर्ड है A के लिए. That means for the reaction C is your overall limiting reagent. समझ आया कि अगर आपका कोई भी रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट दिए हैं तो आप क्या करेंगे? आप पहले दो को कंपेयर करेंगे. You compare first 2 reactants. In those 2 reactants, you first identify limiting reagent. And then you compare, suppose in this case A is limiting out of B, A and B. Then you compare A and C. Then you compare first and third reactant, and then in those reactants you find one limiting reagent. So that will be the reaction's overall limiting reagent. And the amount of product will depend only on the amount of limiting reagent. इसको आपको ध्यान रखना है. देखिए, then amount of D or E, we can write directly that 3 moles of C, 3 moles of C gives how much D? 4 moles. Then यहाँ कितना दिया है? 4 moles of C will produce how much D? 4 by 3 into 4 कितना होगा? 16 by 3. One answer. Then similarly we take E will be how much? 3 moles of C give 5 moles of E. So 1 mole give how many moles? 5 by 3. Then 4 moles give how much? Into 4. That will be how much? 20 by 3 moles. Become your second answer. Next answer. कि 3 moles है, you can write. अगर आपको डाउट हो रहा है तो लिख लिया, आप लिख सकते हैं कि 3 moles of C give how much E? 5 moles. Then 1 mole give 5 by 3. Then for 4 moles into 4, that become how much? 20 by 3 moles.
इज योर आंसर। तो आई होप इट्स क्लियर कि अगर आपका रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट दिए हैं, given 3 reactants, then in those 3 reactants you compare 2, identify in those 2 one limiting, then you compare 1 and 3rd whichever remains, and then for the reaction overall we can find limiting reagent। तो आई होप इट इज क्लियर। सम क्वेश्चन मोर गिवन असाइनमेंट शीट्स आप उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें कंसंट्रेशन टर्म।